Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Pakistan Stroke Society, we are starting our lecture series at Pakistan Society of Neurology's central office located at Karachi in the name of PSN House. Today is our first lecture and we are really thankful for sparing the valuable time by Professor Dr. Sarwar Jamil Siddiqui, who is our teacher, who remained a mentor of many neurologists across Pakistan. We are really thankful to him, to the pioneer of this lecture series. I request him to start his lecture on a very different type of topic, which he will himself elaborate the topic, inshallah. So we will start our lecture, and so that those who had joined us will be on time, and we will end this session on time. Thank you very much, sir. Welcome. Right. Thank you very much, Dr. Abdul Malik. Thank you for inviting me, and thank you for the whole idea of starting a lecture series by neurologists and teachers, so that this can be transmitted and put across. I have chosen this topic, latrogenic neurology, because it is a topic which is not talked about a lot. People who have not muted their microphones, can you please mute the microphone so that there is no disturbance. Thank you so much. Latrogenic neurology. First of all, I must say that I have no conflict of interest to declare in relation to this talk. I'll start with the case history. This is a history of a 47-year-old lady who was admitted to the ER with restlessness and constant shaking, and for 1 day prior to admission. She had a history of depression for which she had been taking fluoxetine, 20 milligrams a day. 3 days prior to this admission, her family physician saw her for dysuria and started her on tramadol, 50 milligrams 3 times a day for pain, ciprofloxacin for suspected UTI, and changed fluoxetine to paroxetine, 30 milligrams a day for continuous depression. On examination, she was afebrile, restless, with constant twitching of her body. Lower limbs were hyperreflexic, and a spontaneous ankle clonus was there with facial flushing without any sweating. So this is the history. We will come back to the history later on. Now the topic is latrogenic neurology. So I'll just explain a little bit about what is latrogenic. The term latrogenic is derived from the Greek word aitros. Aitros means healer and genic means origin. So it is a malady or a problem or a disease which is given by the healer. So it has been used to refer to illness which is induced by or given by a physician. Obviously, almost always without intent. Now, why are we talking about latrogenic neurology and how common it is? It is a very frequent cause of hospital admission, and it is due to drugs in about 60% of people, due to surgery in about 22% of patients, and due to medical acts about 18%. Drugs affecting the nervous system directly or as a side effect. Surgery like cranial or spinal or others, we all know that people who have undergone neurosurgical procedures or any other procedure for that matter, they sometimes do develop deficits because of neurological injury,
That I'm not talking about. I will be talking about medications which cause neurological symptoms. We also know that radiation therapy anywhere in the body can cause iatrogenic neurological disorders. We are not going to talk about this either. So the most common cause of iatrogenic neurological disease is pharmacological, which is often overlooked as a differential diagnosis. Because we are always at the lookout and we always want to make a diagnosis which is written in the books, which we have spoken about, which we talk about a lot, and we do not talk about disorders or problems which originate from neurological illness, from neurological treatment, or treatment by another physician for any other reason. There are two ways of tackling this topic. First of all, I thought that I would just talk about classes of drugs or individual drugs which cause side effects of neurological origin or neurological type, or I will talk about the categories of iatrogenic neurological disorders that they cause. Like classes of drug, like anti-epileptic. What medication? Anti-epileptic medications can cause a lot of neurological symptoms. Like I will give you an example. Like carbamazepine can cause drowsiness and sleepiness. Like any anti-epileptic medication can cause ataxia, nystagmus, gait difficulty. Anti-Parkinsonian medication, for example, levodopa is known to cause postural hypotension. It is also known to cause abnormal movement, which we call coriform movements. It is also very well known to cause psychiatric disorders like hallucinations. Antipsychotic and dopaminergic receptor blocking drugs, they can cause Parkinsonian symptoms. Antibiotics and antivirals, antineoplastic. We know that antineoplastic medications cause neuropathy, or even some of them can cause encephalopathy. Immune modulators, corticosteroids. We know that corticosteroids are an important cause of benign intracranial hypertension. So corticosteroids given for some other reason can actually cause benign intracranial hypertension. Hormones or hormone-related medication, respiratory tract medications like Ventolin, salbutamol causes tremor. We all know that. Digestive and urinary tract medications likewise. For example, long-term use of PPI can cause vitamin B12 deficiency, which will be manifested as ataxia, sensory ataxia, and neuropathy. So we can actually talk about this topic from this point of view, classes of drugs. Or we can talk about this topic by the category-wise, categories of iatrogenic neurological disorders or movement disorders or cerebrovascular disorders, seizures, headaches, etc., etc. So I have chosen the later. I've chosen the categories of iatrogenic neurological disorders, and we will take one category at a time. Movement disorder. So drug-induced movement disorders can be Parkinsonism. They can also be tremors, chorea, tardive syndromes, acute dystonic reactions, and chronic dystonia. These are the 6 most common and important drug-induced movement disorders that I want to talk about. Parkinsonism. Second most common etiology of Parkinsonism is drug-induced after idiopathic Parkinson's disease. It is as high as 7% of all causes of Parkinsonism. Postsynaptic dopaminergic blockade as opposed to presynaptic dopamine blockade. We'll talk about this a little bit later. Dopamine antagonists or dopamine depleting drugs can also cause Parkinsonism. So I will give you some classes of medications which cause Parkinsonism. Typical antipsychotic. In the olden days, we used to use phenothiazines, chlorpromazine, fluphenazine, perfenazine as antipsychotic medications, especially like in conditions like schizophrenia, and they cause Parkinsonism or Parkinson features.
However, atypical antipsychotics, they cause Parkinsonism infrequently. And the example is clozapine or quetiapine. Atypical antipsychotic, risperidone, olanzapine, and aripiprazole, they can cause Parkinsonian medications. SSRIs are infrequent cause. For example, citalopram or fluoxetine. Dopamine depleters. In the older times, we used to use reserpine as antihypertensive. It is no more available. So antihypertensive reserpine used to be a prominent cause of Parkinsonism in the olden days. These days, tetrabenazine that we use for Huntington's chorea to relieve chorea, they cause Parkinsonism. Antiemetics, that is very important. That is very important, very curious. Like metoclopramide can cause Parkinsonism as well as it can cause acute dystonia, especially in younger girls. Anti-Parkinsonian anti-epileptics like sodium valproate and phenytoin can also cause, rarely cause Parkinsonian features. Calcium channel blocker, cynarazine and flunarizine. So how to differentiate IPD, idiopathic Parkinsonism, and drug-induced Parkinsonism? Apart from the history of Parkinsonism, history of medication, the drug-induced Parkinsonism usually starts bilaterally and it is symmetrical from the onset. Idiopathic Parkinson's disease is typically unilateral to start off with. It remains unilateral for several months or even years and then eventually becomes bilateral. But if it starts bilaterally, it is less likely to be idiopathic. It is more likely to be drug-induced or any other cause. Resting tremor is uncommon or absent in drug-induced Parkinsonism. Resting tremor is common and it is present in about 75% of people with idiopathic Parkinson's disease. It is not that common in drug-induced. Then there is obviously a drug history. So every patient you see and you make a diagnosis of Parkinsonism, you must take a drug history. In Pakistan, it is not available, but dopamine transport scan is useful in making the differentiation. You can actually see this. This is the scan. The A shows Parkinson's disease, which is masked by dopamine receptor blocking agents, and B is basically drug-induced Parkinsonism. But this is unfortunately not available in Pakistan. But this is a good method of differentiating between IPD and drug-induced Parkinson. Now, tremor. Drug-induced tremors are caused by a variety of medications, like tricyclic antidepressant we are so fond of, SSRIs that are prescribed by general physician, by neurologists, by psychiatrists, everybody. They can cause tremors. Beta agonists, like as I said, salbutamol, even corticosteroids, cyclosporin, amiodarone, lithium. Lithium is notorious to cause tremor. All the antipsychotic medication that we discussed earlier, metoclopramide, nicotine excess, and valproate. So if a patient is epileptic and has been started on valproic acid, develops tremor of short duration, must think of valproate as the culprit. So what are the features of drug-induced tremor? A careful history should be obtained to exclude tremors which may have been present before the drug initiation. So there is a relationship between when the drug was started and when did the tremor start. It usually occurs within a reasonable time frame following drug ingestion. It may not be immediate, but usually over several months. A dose-response relationship is there. Higher the dose of medication, more chances of developing tremors, or
increasing the amplitude of tremors. Discontinue the medication should result in complete resolution of the tremor. If the tremor is drug induced, stop the medication and it should stop. Head tremor is usually not a feature of drug induced. If there is head tremor, must think of some idiopathic variety like essential tremor. A stable medication dose should not worsen tremor progressively. अगर एक मरीज़ है जो कि एक दवाई पर है और डोज उसकी महीनों और सालों से एक ही है, अचानक एक दिन बैठे बैठे उसको ट्रेमर शुरू नहीं होगा या ट्रेमर बढ़ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि इसेंशियल ट्रेमर और पार्किंसन डिजीज़ में प्रोग्रेसिवली ट्रेमर इंक्रीसेस, drug induced tremor without changing medication dose does not change. So this is another distinguishing feature of drug induced tremor. As I said earlier, discontinuing the medication should result in complete resolution of the drug induced tremor. Head tremor is not a feature. A stable medication dose should not worsen tremor progressively. How do you treat it? Stop the causative agent. If not possible, lower the dose. If even that is not possible, that start a small dose of beta blocker like propranolol, which may be beneficial. But the treatment which actually works is stopping the medication, which at times may not be possible. Chorea. Chorea is produced by the dopamine agonist or dopamine itself, like levodopa, and dopamine agonists like pramipexole or ropinirole. Anticonvulsant medications, they may also cause chorea, but its risk increases with polytherapy, combination of phenytoin and lamotrigine in particular. Other medications like amiodarone, amphetamine, antihistamine, antipsychotics, oral contraceptive pills, and metoclopramide, they have all been described to produce chorea. But for us, the commonest cause is levodopa or dopamine agonist and the medications which cause like anticonvulsant. Tardive syndromes. Tardive syndrome, to understand tardive means old, chronic. Okay, so tardive dyskinesia means abnormal movement which is chronic, which is long standing. Tardive syndrome is a group of delayed onset, usually after 3 months, abnormal involuntary movements caused by dopamine blocking medications like antipsychotic medications. अगर आप में से किसी ने वो फिल्म देखी होगी अवेकनिंग, तो उसके अंदर ये कहानी है एक मेंटल असाइलम की, उसमें मोस्ट पेशेंट्स वुड हैव एबनॉर्मल मूवमेंट. सो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. If you want to have a visual of what tardive dyskinesia means, this is what tardive dyskinesia means. So it is caused by dopamine blocking drug like antipsychotics. Tardive dyskinesia is a rhythmic involuntary movement of tongue, face and jaw. Tardive dystonia is sustained involuntary contraction mostly of the face and neck. There is akathisia, means restlessness, and tics and myoclonus. So these are the variety of tardive syndromes, but the commonest tardive syndrome is dyskinesia, abnormal movement. Usually they are choreiform. Acute dystonic reaction. This is very interesting. It is very dramatic reaction to a drug, especially occurs in young people under 20 years of age. Males are more commonly affected, females are more commonly affected than males, and the dopamine depleting drugs such as antihistamine, antipsychotics, antiemetic, especially metoclopramide, tetrabenazine and antimalarials, they cause पहला डोज दिया एंटीमेटिक का मेटाक्लोप्रोमाइड और हाथ पैर टेढ़े हो गए और मरीज़ के घर वाले समझ रहे हैं कि कोई आसिफ वगैरह का असर है या कुछ आया है, वो लेके आ गया आपके पास, आपने उसको डायग्नोज किया कि ये डिस्टोनिया है, आपने उसको एंटीकोलिनर्जिक दिया और वो जादू की तरह मरीज़ ठीक हो गया. वो मरीज़ सारी उम्र आपका मुरीद हो जाएगा, मरीज़ भी और मरीज़ के घर वाले भी, कि डॉक्टर साहब इतनी ख़तरनाक बीमारी के साथ आए थे, बिच्ची का तो मुंह भी टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी, आपने एक इंजेक्शन दिया जो 3 रुपए का था और उससे वो ठीक हो गई.
So this is important to identify. और यही है कि ये most commonly it is due to either antipsychotic or antiemetic. It usually occurs after the first dose. It affects the head and neck and trunk. Neck is retracted back. There is protrusion of tongue, trismus, and oculogyric crisis. The eyeballs go up, move superiorly, and it is most gratifying treatment, anticholinergic or benzodiazepine, if the patient becomes normal. But must make sure to explain to the family that this drug should not be given again, because it will cause the same problem again and again and again. However, because it is receptor related, in old age it is very rare. See, in old it is genetic predisposition, and as we grow older, the receptors are blunted and the same effect is not seen. So it is possible that a young girl at 15 developed an adverse reaction, dystonic reaction, will not develop the same reaction at 60 because of blunting of the receptors. Now, chronic dystonia. ये तो acute dystonia की बात थी, metoclopramide वाले. Chronic dystonia. Chronic dystonia is associated with Parkinsonian medication. Levodopa, dopamine agonist, phenytoin, also phenytoin, phenobarbital, tetrabenazine. Sometimes dystonia is seen as a part of Parkinson's disease, typically described as early morning calf or foot cramps. कि डॉक्टर साहब सुबह उठते तो हाथ पैर में बहुत ऐंठन होती है और बिल्कुल सख्त हो जाते हैं हाथ पैर. It is actually the wearing off symptom of the last dose of dopamine agonist which was taken at night, the previous night. तो इसको डोपामिन दे देंगे, लिवोडोपा दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर क्रॉनिक डिस्टोनिया दवाई की वजह से है तो वो वर्स हो जाएगा. तो ये भी याद रखने की बात है कि समटाइम्स क्रॉनिक डिस्टोनिया इज अ पार्ट ऑफ पार्किंसन डिजीज, और यह आमतौर पे सुबह में होता है जब वेयरिंग ऑफ हो रही हो. अब दूसरा कैटेगरी है सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज. ये सब जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बोटिक मेडिकेशन कॉज सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज, आर्टीरियल और वीनस दोनों. कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये हमें मालूम है, इस पर हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. आपको वीनस स्ट्रोक हमें पता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और एंड्रोजन्स दे हैव शोन स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ CVST. हम अक्सर ये देखते हैं CVST के साथ यंग वुमन आती है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे है और डिहाइड्रेटेड भी हो गई है. ये जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं जो कि वीनस स्ट्रोक होता है, लेकिन ये हाइड्रोजेनिक नहीं है वैसे प्रेगनेंसी पैराडाइम. सीजर, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सीजर कॉज करती हैं, जिसके हम बारे में हमें हम सोचते नहीं हैं. मिसाल के तौर पे एनसेड. सम पीपल आर वेरी सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव टू एनसेड. वारन का इंजेक्शन लगाया और फिट हो गया. ट्रामाडोल, मेनी पीपल वुड हैव दिस. ट्रामाडोल पेन की दवाई है, पेन के लिए हम ट्रामाडोल दिया और पेशेंट को सीजर हो गया. एनाल्जेसिया, डायमॉर्फिन या मिलती नहीं है, स्ट्रीट में मिलती है बदकिस्मती से, बाजार में नहीं मिलती है. एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, केफेलोस्पोरिन, क्विनिलोन. एंटी डिप्रेसेंट, क्लोजापिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, दे मस्ट बी वेरी वेरी रेयर, very very rare. But in this drugs causing or precipitating seizure में precipitation is more important. Like a patient who is known to have epilepsy, which is controlled on anti-epileptic medication, and suddenly the patient was given quinolone for a UTI. Quinolone reduces the threshold of seizure and the patient can get a breakthrough seizure. So that is something that you must understand. But everybody does not get it. It is not very common. Drugs and seizure. अब क्या दो बातें हो सकती हैं. एक तो विड्रॉल की वजह से हो सकता है कि सडनली बेंजोडाइजेपिन या बारबिटरेट खा रहे थे, बंद कर दिया, सीजर हो गया. ये भी हाइड्रोजेनिक हो सकता है. आपने अपने नुस्खे में बताया नहीं था कि जनाब इस दवाई को आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है, अचानक कम नहीं करेंगे, अचानक कम करेंगे सीजर हो जाएगा. और फिर यह है कि देयर इज ड्रग इंटरेक्शन which is caused by other medications like
एक पेशेंट है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे है और आपने उसको ऐसी दवाई दी जो P450 सिस्टम को ख़राब करती है, इंड्यूस करती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन की मेटाबॉलिज्म ख़राब होती है, उनका लेवल कम हो जाता है और पेशेंट को ब्रेक थ्रू सीजर होता है। हेडेक, जी हाँ, दवाइयों से सर में दर्द भी होता है। We know about 8% of people, 8% people have headache caused by medications. Vasodilator, nitrates, सबलिंगुअल नाइट्रेट ख़ास तौर पे एंजाइना के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम, जो माइग्रेनस पेशेंट होते हैं, माइग्रेनियर, उनके अंदर सिवियर हेडेक होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन एक्चुअली मेक देयर माइग्रेन वर्स, राइट। डाइपेरेडमोल जो पुराने ज़माने में परसेंटिन के नाम से मिलती थी, अब बहुत मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती, वो भी हेडेक करती थी। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, मिसाल के तौर पे वो दवाइयाँ जो नेज़ल ब्लॉकेज के कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं नेज़ल स्प्रे की सूरत में, ठीक है, वो भी हेडेक करती हैं। हार्मोनल प्रिपरेशन हेडेक करती हैं, वो एज ए सिम्पटम, एज ए साइड इफ़ेक्ट और ऑल्सो एज कॉज ऑफ BIH हेडेक करता है और ये हार्मोनल प्रिपरेशन BIH के चांसेस को बढ़ा देती है। However, headache is a very common symptom in general population and many patients are on some regular medication at any given point in time. तो इसको इतनी जल्दी आसानी से कबूल नहीं करना चाहिए कि ये आपकी फ़लाँ दवाई की वजह से, because most people who come to our clinics, our hospitals, they are taking medications. So अगर कोई नई दवाई ली गई है या कोई दवाई में तब्दीली की गई है तो उसको तो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर वही दवाई चल रही है तो वो बैठे बैठाले हेडेक नहीं करेगी। एक चीज़ होती है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, जो कि हमारा प्राइमरी हेडेक है। ख़ास बात मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक की ये है कि एक अंडरलाइंग प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर होना ज़रूरी है। एक पेशेंट है जिसको माइग्रेन है या एक पेशेंट जिसको क्रॉनिक टेंशन हेडेक है, ठीक, और वो दवाई ले रहा है, तो ओवर यूज़ अगर करेगा दवाइयों को तो उससे वो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो जाएगा। सो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक डायग्नोसिस इन बिफोर डायग्नोसिंग ऑफ मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर हैज़ टू बी एन अंडरलाइंग प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर increases, that headache increases, gets worse as you increase the dosage of medication, right। जो उर्दू का मिसरा है कि दर्द बढ़ता गया जूजू दवा की, ये वही सिलसिला है। Patients are often unaware that the very medication that they are taking for headache is perpetuating the problem. Many physicians are also unaware of this. इस क्या क्या चीज़ें एर्गोटामिन करती है काम, ट्रिप्टान करती है, ओपियोइड भी करती है, इवन कंपाउंड एनाल्जेसिक अगर 10 दिन से 1 महीने से ज़्यादा लें तो ये कर सकता है और मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। सिंपल एनाल्जेसिक अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा लेते हैं 1 महीने में तो दैट कैन ऑल्सो कॉज मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बंद करना दवाई, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मरीज़ कहता है नहीं डॉक्टर साहब इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, ये दवाई से तो मेरी जान बची हुई है, वरना तो इतना शदीद दर्द होता है। उसको समझाना होता है कि जनाब यही दवा आपके दर्द का बाइस है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोफिलैक्सिस के लिए कोई दवाई दी जाए और ये एक्यूट मेडिकेशन को रोका जाए। एमिट्रिप्टिलिन, SSRI, सोडियम वैल्प्रोएट, बीटा ब्लॉकर, वेरापामिल, टोपेरामेट, दीज आर द मेडिकेशन विच आर टू बी यूज्ड। और कुछ दिनों के लिए मरीज़ को बोलना पड़ेगा कि आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि अदरवाइज मरीज़ अगर बर्दाश्त नहीं करेगा, रेस्क्यू मेडिकेशन ले लेगा, वो साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। अब एक केस हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 30-year-old female, 3 months history of headache, background constant headache with exacerbation for a few hours or a day, diffuse but more prominent over the back of the head. Visual obscuration described as transient blurring of vision, which is lasting less than half a minute. She was started on combined contraceptive pill after the birth of her 3rd child 8 months ago. Visual acuity on examination was 6 out of 6 on Stalin's chart. Pupil size was normal. Reflexes were brisk bilaterally. And fundoscopy showed this. So I'm sure that you can
diagnose it very easily. There is bilateral papilledema. There is swelling of the disc. The disc margin is not very clearly seen, and there is edema of the disc. The diagnosis is idiopathic intracranial hypertension, and the cause was oral contraceptive pill. So this is why this is a iatrogenic disease. Usually young female who are obese, which is 19 times more common in female between 24 and 44 years of age. The incidence is about 1 in 100,000 per year. It is daily headache with transient visual obscuration, intracranial noises, which is described as buzzing sound or wind rushing or heartbeat in the ears. The headache is daily, transient visual obscuration. There is bilateral papilledema on examination. Occasionally there is 6-nerve palsy and diplopia. The rest of the neurological examination is normal. As most of you would remember that in the olden days we used to call it pseudotumor cerebri. Why pseudotumor cerebri? Because headache with bilateral papilledema. Right? The first thought is that this is a tumor. Bilateral papilledema and headache, this is a brain tumor. But there is no brain tumor. That is why it is called pseudotumor cerebri. Investigation, you do a CT scan of the brain or MRI, which may be normal or can show diffuse cerebral edema. The ventricular size is small and they are pinched, there is no mass lesion. You do a lumbar puncture and you find that the CSF opening pressure is raised more than 300 usually. Normal CSF pressure is less than 180 millimeter or 18 centimeter of CSF. In BIH, mostly it is over 300. However, CSF chemistry and microscopy has to be normal. It is mandatory to have a normal biochemistry and microscopy of CSF for diagnosis. If CSF microscopy is abnormal, chemistry is abnormal, you should not accept idiopathic intracranial hypertension as a diagnosis. There is some infection in the central nervous system. Idiopathic intracranial hypertension is also caused by venous engorgement or venous thrombosis, जिसको कहते हैं हम venous sinus thrombosis, and that is confirmed by CT venogram or MR venogram. It is important to rule out thrombosis because the treatment of thrombosis is entirely different. You need to give anticoagulation for at least 6 months to 9 months. This is a representative CT scan of the brain which shows a small ventricles. There are some drugs which are associated with benign intracranial hypertension or idiopathic intracranial hypertension. It is no more called benign because it is no more benign. We know that it can cause lasting problem and irreversible neurological deficits. So that new name, appropriate name is idiopathic intracranial hypertension. Combined contraceptive pill is the commonest one. Tetracycline, which is no more used to be a common one. Retinoids, especially in people with pimples, it used to be used for pimples. It no more used anymore. Vitamin A, steroid withdrawal. If somebody is on steroids for a long time and you start reducing the steroids, it may actually precipitate idiopathic intracranial hypertension. But curiously, steroid is also a treatment of IH. It is rarely reported with mesalazine, indomethacin and sodium valproate. But for practical purposes, the commonest drug which is the culprit is combined oral contraceptive pill. Now, altered mental status and cognitive impairment. There are medications which will cause this. It is a very common clinical problem that we see in, especially in inpatients. Every day you are called to see a patient from orthopedic, from general surgery, from obs and gynae, from internal medicine कि साहब ये मरीज जो है वो ड्राउजी है, जाग नहीं रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, इसको आके देख लो.
एक केस हिस्ट्री सुनाते हैं. A neurologist was asked to see a post-bone marrow transplant patient with 2 generalized tonic-clonic seizure. This was day 4 of BMT. She was started on sodium valproate. Drug history, in addition to broad-spectrum antibiotic and ganciclovir, she was on cyclosporin, and that was the prophylaxis for viral infection in case of bone marrow transplant, which is a standard treatment. The level of cyclosporin was within therapeutic range. On examination, 24 hours after the seizure was aborted, she was confused, disoriented, moving all 4 limbs, but bilateral extensive plantar response. Neck was supple, kernings were negative. MRI brain was already done by the hematology team. And this is what the MRI showed. So you can actually see bilateral, posteriorly located, symmetrical hyperintense signals. Both in T1, T2, both in T2 and flare. The other one is flare image. So you can actually see hyperintense signal which is symmetrical. So this is called PRESS, posterior reversible encephalopathic syndrome. The medications which are responsible for or which have been which are known to produce this are the new medications like bevacizumab, sorafenib, cisplatin, oxplatin, cytarabine. These are the chemotherapeutic agents and immune modulators. Immunosuppressors, tacrolimus, sirolimus, cyclosporin, methotrexate, rituximab, IVIG, cyclophosphamide, and interferon alpha. So these are the medications which can cause PRESS. अब ये वाली हिस्ट्री आ गई जो हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी. 47-year-old lady was admitted to ER with restlessness and constant shaking and restlessness for 1 day prior to admission. She had a history of depression for which she had been taking fluoxetine 20 mg a day. 3 days prior to this admission, her family physician saw her for dysuria and started tramadol 50 mg 3 times a day for pain, ciprofloxacin for suspected UTI, and changed fluoxetine to paroxetine 30 mg a day for continuous depressive symptoms. On examination, she was afebrile, restless, and was constantly twitching. There was twitching of the body, lower limb hyperreflexia, spontaneous ankle clonus, facial flushing without any sweating. So what is the diagnosis? Diagnosis is serotonin syndrome. Serotonin syndrome is basically triggered when SSRIs are taken in combination with another medication like tramadol. So the combination of an SSRI and tramadol is dangerous. Okay, you must be very careful. Or a substance that also raises serotonin level like another antidepressant, जैसे इस केस में इन्होंने फ्लोक्सिटीन को बंद करके पेरोक्सिटीन दे दी थी. ठीक. और 2 SSRI taken at the same time. आप अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि एक ही मरीज को दोनों दवाइयाँ मिल रही हैं. एक पेरोक्सिटीन भी मिल रही है और फ्लोक्सिटीन भी मिल रही है. मिर्टाज़ेपिन भी मिल रही है और फ्लोक्सिटीन भी मिल रही है. तो ये मामला ठीक नहीं है. SSRI, SNRI ये देना दो देना बिल्कुल सही नहीं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोक्सिटीन अब्रप्टली स्टॉप्ड एंड पेरोक्सिटीन और साइटोलोपेरम स्टार्टेड. फ्लोक्सिटीन का हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है. जब तक वो वेयर ऑफ होगा उसका टाइम देना चाहिए, फिर बदलना चाहिए. अदरवाइज़ ये शुरू के 4-5 दिनों में डबल डोज हो जाएगा. फ्लोक्सिटीन पुरानी वाली चल रही थी, आपने अब पेरोक्सिटीन दे दी है. ये मसाइल होते हैं. तो इससे हमने क्या सीखा कि SSRI कोई ऐसी मासूम दवाई नहीं है और इसके साथ दूसरी दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर पेन मेडिकेशन ट्रामाडोल. और अगर एक SSRI से बदल के दूसरे SSRI देना है तो बीच में एक गैप होना चाहिए. ड्रग विच कैन कॉज और ट्रिगर ए सेरोटोनिन सिंड्रोम, फ्लोक्सिटीन, citalopram, sertraline, SNRI, duloxetine, venlafaxine, even TCA, amitriptyline, मोनोमेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेनोजीन, लिथियम, ट्रिप्टान, एनाल्जीजिया जिसमें ट्रामाडोल, फेंटेनिल, कोडीन,
और एंटीबायोटिक लिनाजिलिड। लिनाजिलिड के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें हैं कि ये SSRI की मौजूदगी में लिनाजिलिड देना मुनासिब नहीं है। सेरोटोनिन सिंड्रोम कैसे डायग्नोज करते हैं? माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। अगर माइल्ड है तो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होगी, कुछ ऑटोनॉमिक साइंस होंगे, फेब्राइल या लो ग्रेड फीवर होगा, टैकिकार्डिया, माइड्राइसिस, डायफरेसिस और शिवरिंग। न्यूरोलॉजिकल साइन में क्या होगा? इंटरमिटेंट ट्रेमर्स होंगे, एक कैथीजिया होगा, मैक्लोनस एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। अगर मॉडरेट होगा तो पेशेंट विल बी इजीली स्टार्टल्ड, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, एजिटेशन, हाइपर विजिलेंस, चौकन्ना रहेगा, हर चीज़ में जो है वो चौंक जाएगा, और इंक्रीज टैकिकार्डिया, फीवर, डायरिया, हाइपर एक्टिव बावल, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ऑक्यूलर क्लोनस हो सकता है, और अगर ज़्यादा हो तो रेब्डोमायलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह वगैरह। अगर और सीवियर है तो सेरोटोनिन सिंड्रोम कैन प्रेजेंट विद डिलीरियम एंड कोमा, और बाकी हाई टेम्परेचर 41 से ज़्यादा, इंक्रीज टोन, और बाकी सारी ऊपर वाली चीज़ें जो बताई। कॉजेटिव एजेंट हम आपको बता चुके हैं, इसको हम डिस्कस करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है या ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, इसलिए कि उसके अंदर भी एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल ट्विचिंग होती है, उसके अंदर भी फीवर होता है, दोनों में फीवर होता है, तो इसलिए जो है वो ये कन्फ्यूजन हो सकता है। दोनों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय SSRI, TCA, मोनोमर ऑक्सीडेज इन्वर्टर्स। न्यूरोलेप्टिक्स अगर दिया जाए या सडन विड्रॉल किया जाए तो हो जाएगा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में। मैकेनिज्म दोनों का बिल्कुल अलग है, एक D2 रिसेप्टर्स की वजह से होता है और एक ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। ऑनसेट सेरोटोनिन का बहुत जल्दी होता है, विदिन 24 आवर्स, लेकिन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का 5, 6, 7, 8 दिन लगते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर डिपो इंजेक्शन लगाया गया हो, जैसे कि फ्लूफेनाजिल डिपो। सिम्टम में ऑटोनॉमिक, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो ये कॉमन है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? मायोक्लोनस, डायरिया, नोसिया, शिवरिंग ये ज़्यादा कॉमन है सेरोटोनिन में, और डिस्फेजिया, हाइपर सैलिवेशन, इनकॉन्टिनेंस ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। साइंस में एक में डायलेटेड पिपल होगा, माइक्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया सेरोटोनिन सिंड्रोम में, और उसमें टेम्परेचर, एक एनीजिया और एक्स्ट्रा पेरिफेरल रिजिडिटी होगी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। WBC काउंट दोनों में बड़ा होगा, लेकिन CPK न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मेन ट्रीटमेंट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का है डिसकंटिन्यू द कॉजेटिव एजेंट एंड सपोर्टिव, और मेन ट्रीटमेंट सेरोटोनिन सिंड्रोम का डिसकंटिन्यू द कॉजेटिव एजेंट एंड सपोर्टिव। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेंजोडाइजेपिन, साइप्रोहेप्टेडिन, क्लोरप्रोमिजिन देते हैं सेरोटोनिन में, और डोपामिन एगोनिस्ट, एमेंटेडिन ये देते हैं हम न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है सेरोटोनिन में, विदिन 24 आवर्स, और लेकिन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर तकरीबन 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर रीनल इम्पेयरमेंट इशू हो जाए, इसलिए कि ये रीनल इम्पेयरमेंट करता है, रेड यूरिन होता है इसका मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से। नर्व एंड मसल, so we are near the end, don't worry. It is a very well, nerve and muscle disease is very well complication of chemotherapy. Platinum based medication especially, right, cisplatin या taxanes जैसे डोसीट्रैक्सल, विंका एंड कलॉइड जो आजकल कम इस्तेमाल होता है, हमारे ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है विनक्रिस्टीन, और माइलोमा का ट्रीटमेंट जो आजकल नया है बॉर्टिजोमिब, ये करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ख़ास बात क्या है इसकी? ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज प्रिडोमिनेंटली सेंसरी। इट इज़ रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज और डोज इंसिडेंस है। डोज कम करेंगे, कम डोज देंगे, कम इंसिडेंस है, बढ़ा के डोज देंगे, ज़्यादा डोज देंगे, ज़्यादा होगा। यूजुअली डिलेड, appearing weeks after initiation, peripheral paresthesia, burning, pain and discomfort are the main symptom. Loss of tendon reflexes is examination finding. Usually does not require confirmation by nerve conduction study. अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है कि पेशेंट कीमोथेरेपी पे है और उसको पेरिफेरल पैरेस्थीसिया, बर्निंग हो रही है, ए रिफ्लेक्सिया है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नर्व कंडक्शन टेस्ट करके पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। तो कीमोथेरेपी के अलावा कोई और दवाइयाँ भी होती हैं जो कि न्यूरोपैथी करती हैं, लाइक पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकॉल, ये हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल आजकल कम करते हैं। कोलेस्टीन, मेट्रोनाइडाजोल, डैप्सोन, आइसोनाइजिड, वी ऑल नो, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन जिसके लिए हम विटामिन B6 देते हैं रेगुलरली। इथाइलबुटॉल, इथाइनोमाइड, फेनेटोइन डाइसल्फराम और हाइड्रालिजिन जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, हाइड्रालिजिन हाइपरटेंशन के लिए, ये भी रेयरली न्यूरोपैथी करती है। GBS, acute neuropathy, 3 चीज़ें हैं। हेपेटाइटिस वैक्सीन, वी नो दैट इट कैन कॉज गुएन-बरेल लाइक सिंड्रोम, like influenza vaccine, and now COVID-19 vaccine has also been reported to cause acute neuropathy which looks like Guillain-Barré। न्यूरोमस्कुलरी के अंदर ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस बाज़ दवाइयों से वर्स हो जाता है, ठीक, जिनमें टेट्रासाइक्लिन, पॉलीमिक्सिन वगैरह, और सबसे ज़्यादा एमाइनोग्लाइकोसाइड और क्विनिलोन। पेनिसिलिन और बीटा ब्लॉकर कैन रेयरली कॉज माइस्थीनिया, लेकिन ये जो बाकी जो ड्रग्स हैं ये एस्टैब्लिश माइस्थीनिया को बिगाड़ सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। एक बंदा है जो 6 गोलियाँ पेरिडोक्सिमीन पे चल रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, यूटीआई हो गया और उसके दे दिया अमिकासिन IV, या यूटीआई हो गया उसको दे दिया सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो उसका माइस्थीनिया बिगड़ सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो मायोपैथी करती हैं, एंटी मलेरियल, स्टैटिन, हम सब जानते हैं कि मायोपैथी मसल पेन करता है और ज़्यादा शदीद हो और बंद ना किया जाए तो मायोपैथी भी करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वी ऑल नो दैट ऑल द स्टेरॉइड्स दे कॉज प्रॉक्सिमल मायोपैथी। बाकी कुछ इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स हैं, पेनिसिलिन, डिजिलाविडिन वगैरह, ये भी मायोपैथी करती हैं। स्टैटिन की मायोपैथी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टैटिन आर नोन टू कॉज मायोपैथी, दे 1 to 5% ऑफ पीपल ऑन स्टैटिन डेवलप दिस, नॉट एवरीवन। सेरिवेस्टेटिन जो पहले मिलती थी वो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस था उसका, अब वो बंद हो गई है। सेरिवेस्टेटिन हैज़ बीन विड्रॉल वर्ल्ड वाइड इन 2001। तो लेकिन ये कि जो कम इंसिडेंस जिनका है वो अटोरवास्टैटिन और प्रोवास्टैटिन है, ये दोनों में इंसिडेंस कम है, 0 नहीं है लेकिन है। सेरेबेलर सिंड्रोम, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डिसार्थ्रिया, एटैक्सिया, निस्टैग्मस, वर्टाइगो, इन सब के साथ आते हैं, जनाब चक्कर बहुत आने लगे हैं, तो इसके लिए यूजुअली जो है हाई लेवल ऑफ मेडिकेशन, स्पेशली एंटी एपिलेप्टिक, फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन वगैरह, इनके लिए हमें सोचना चाहिए कि दवाई बढ़ गई। या फिर नॉन एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक जैसे लिथियम, फ्लोरोयूरेसिल, साइटारोबिन, ये भी करती हैं सेरेबेलर सिंड्रोम। ऑप्टिक न्यूराइटिस, इथाइलबुटॉल का नाम याद आता है हमेशा। तो ये दिस इज द एंड ऑफ द टॉक। latrogenic neurology is important because about 7% of people with neurological disorders, the underlying cause is drug। हमने अभी इसमें बात नहीं की रेडिएशन की, इसलिए कि रेडिएशन भी डॉक्टर ही देते हैं और उसकी वजह से मसाइल होते हैं, उसको भी लाट्रोजेनिक कहते हैं। ऑपरेशन के बाद कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ हो, कोई ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो, ब्रेन ट्यूमर के लिए, और उसको ब्रेन ट्यूमर के बाद ट्यूमर तो निकाल दिया लेकिन एपिलेप्सी हो गई, ठीक, स्कार एपिलेप्सी, या पेशेंट का ऑपरेशन हुआ लंबर स्पाइन का और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, इसको हमने जो इंक्लूड नहीं किया, हमने इंक्लूड किया सिर्फ दवाइयों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये अनम्यूट कर दें लोगों को, कोई क्वेश्चन है तो लोग कर लें, क्योंकि ऑन एवरेज 30। हाँ, एनी क्वेश्चन? वीडियो भी स्टार्ट कर दें अभिषेक। ठीक है, ठीक, आप इसमें देख लें कि नहीं, मेरी वीडियो तो मैंने बंद की हुई है।
मेरी शक्ल आप देख के लोग क्या अपनी कहें? नहीं कर दें, अभी ऑन कर दें। अच्छा कर दिया, आप कर दिए। आवाज नहीं आ रही भाई यहाँ। अनम्यूट कर दें। कोई साहब कह रहे हैं, फवाद साहब कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। नहीं फवाद सब तो यही है ना, ये हमारे पास कंट्रोल है। अच्छा, वाकई मैं ये देख लेता हूँ, इसमें कोई भी नहीं, देयर इज नोबडी हु वांट्स टू स्पीक। म्यूट तो बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ अनम्यूट कर दिया सबको। म्यूट कर दिया, लेकिन देयर इज नोबडी। हाँ ठीक ठीक। चैट में देख लो क्या है। शफकत हुसैन साहब कह रहे हैं ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लिसन टू डॉक्टर सरवर। पता नहीं क्या क्यों कह रहे हैं, अल्लाह बता जानता है। सलीम बड़े साहब भी हैं। हाँ और वालेकुम इस्लाम। आप ही कोई सवाल कर लें। और आई थिंक शायद सवाल इसलिए नहीं है कि बहुत एक्सप्लेनेटरी बुक था। अच्छा, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो गए। थैंक यू मैमुना, थैंक यू। आई चोज दिस टॉपिक बिकॉज वी डू नॉट टॉक अबाउट इट एंड बट वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार कुछ को बीमारी होगी। हाँ, हालांकि सामने की बात होती है कि जो कुछ हुआ है दवाई वैसे हुआ। आप यकीन करें कि कई चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए भी यानी रूटीन मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत, जब मैं इसको बना रहा था हाँ मतलब तो मेरे ये लिए बहुत अजीब चीज थी। मतलब कि कई ड्रग्स चल रही होती हैं और बिल्कुल आप आईसीयू में पेशेंट देखते हैं और अपना काम करके आ जाते हैं, और वो काम जो असल पैदा कर रहा था उसको तवज्जो ही नहीं होती। खास तौर पे ये जो स्कार एपिलेप्सी के नाम पे बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट हो जाती हैं। आई थिंक एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि जब भी आप मरीज देखें तो उसकी ड्रग हिस्ट्री ना, चाहे आप देख रहे हो या आईसीयू में देख रहे हो, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री जरूर। एब्सोल्युटली। वो सर आपको याद होगा जब आप कोर्स एकीयू में कराते हैं ना, तो उसमें आप हिस्ट्री वाला आप पार्ट लेते, तो आपका वो है ना कि न्यूरोलॉजी में ऑलवेज टेक हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड देन ऑलवर्ड चीज। क्वेश्चन चैट पे देखिए इसको तो निवास कर दिया। Looks it's turned for civil hospital, पता नहीं क्या क्या कुछ है। Looks it is turn off for civil hospital Peshawar films for very good platform. सवाल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे सर है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन है तो हम वो जरूर, ये तो इसको मिनिमाइज कर ये तो सर है। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, हाँ अनम्यूटेड सबको कर ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको या वी विल कॉल इट अ डे। और हमारा ये क्या वेरी आप लोगों से अपील ये है कि जो कराची बेस्ड है बेसिकली उनके लिए कि ये जो नया हमारा ऑफिस बना है बेहतरीन ऑफिस है। इस ऑफिस के लिए इस ऑफिस का दौरा करें, आए देखें बैठें, और यहाँ ये मुलाकात की एक जगह है। कोई बहुत मुश्किल मेन शहर है फैसल पे है, और इसको का फ़ाल बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो हमें कोई ना कोई प्रोग्राम रेगुलर करना पड़ेगा। डॉक्टर मालिक के साथ हमने ये सोचा है, मेरा मशवरा था डॉक्टर मालिक को कि इसको फ़ाल बनाने के लिए एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, इसलिए कि जो हम जैसे टिमटिमाते चिराग है ना न्यूरोलॉजी के, हाँ उनको उनके साथ आप बैठे हैं। इससे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ न्यूरोलॉजी की बातें करें, कुछ और भी हमारा तजुर्बा है न्यूरोलॉजी के अलावा दुनिया और दीन का, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन मामला है ना, उसके बारे में जो शेर है कि ज़बान गैर से क्या शर आरजू करते, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कोई आदमी सामने ना बैठा हो और उसके साथ इंटरेक्शन सामने ना हो रहा हो, तो वो ज़बान गैर से शर आरजू वाली बात होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।